फाइनली गाइस देख सकते हो हाइड्रोलिक लग गया। देख रहे हो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे और एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बेड का हाइड्रोलिक लगाएंगे। तो चलिए किस तरह से लगाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को। गाइस ये हमारा हाइड्रोलिक है 150 किलो का, देख रहे हो। तो बेड भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इसलिए कम वजन का हाइड्रोलिक लगाना पड़ रहा है। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना गाइस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हाइड्रोलिक लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक 3 इंची का पट्टी ले लेना है और इसको यहाँ पे लगा के हाइड्रोलिक को ऐसे टच करके ये होल जो है सारा होल में स्क्रू डाल देना है। सारा होल में स्क्रू डालना है, एक भी नहीं छोड़ना है। और उठवे लूँगा। हाँ ठीक है। तो गाइस देख सकते हो हाइड्रोलिक लगा दिया दोनों तरफ का सेम। अब क्या करना है, ये हमारा चाबी है, रेडी है। इसको इस पर ऊपर से बिठा के अंदर जाके दाग ले लेना है, प्लेट से, मार्किंग से, कुछ भी से। ये होल में सब में दे देना है, किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोलिक का बहुत प्रेशर होता है। तो चलिए कैसे दाग देते हैं दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ। अब दाग लेना है। पहले ये बड़ा वाला को ले देते हैं, एक हो गया। अब इसमें लेंगे, दो काफ़ी है। अब उस तरफ का दो ले लेते हैं, बाद में हाइड्रोलिक में उठा के सब स्क्रू कर देंगे। फाइनली गाइस 2 हो गया। अब बाहर जाते हैं, चलिए।
हाँ टेस्टिंग कौन दी? फाइनली गाइस देख सकते हो हाइड्रोलिक लग गया। देख रहे हो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और कारपेंटर भाई लोगों को शेयर कर दो। देख रहे हो, सब्सक्राइब गाइस ज़रूर करना, सब्सक्राइबर बहुत कम है भाई का। देख रहे हो गाइस, फाइनली गाइस समझ गए हो कैसे लगाना है।